Start with some topic. The next topic is antonyms and synonyms, and as I promised, this antonyms and synonyms is best studied when you are doing some practicing, when you are actually doing some practicing with it. So today we'll practice and we'll understand also, and we'll practice also what's going on. Okay, so what is an antonym and what is a synonym? What is a synonym? A synonym is a word or a phrase. वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. ओके, द मीनिंग ऑफ विच इज द सेम और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज. दैट मीन्स सपोज दिस इज अ वर्ड and this is a word. When they are equal, they are called synonyms, and in the same way, when they are opposite to each other, they are called antonyms. Okay, so we'll see some examples. Synonym का example, artful. He is very artful. हम लोग बोलते हैं he is very artful. What is the meaning of artful? Crafty. What is the meaning of crafty? Crafty means very cunning. Very cunning, shrewd. Whatever work he does in a very shrewd way. Clever, shrewd. So this is called artful. Okay. बैलट, BALLOT. बैलट का मतलब क्या है? वोटिंग हम लोग जब करते हैं, वोटिंग का जो वोट होता है, जो वोटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलिंग बोलते हैं ना, POLLING. वोटिंग को पोलिंग भी बोला जाता है. तो वोटिंग एंड पोलिंग, दे आर सिनोनिम्स. पोलिंग एंड बैलट आर ऑल्सो सिनोनिम्स. आई होप इट्स क्लियर. ओके, deceptive, misleading. Deceptive is equal to misleading. Okay, deceptive, who are deceptive people? Who show something else on the outside, but from inside they are something else. Like suppose the animal called a chameleon. I hope you have seen a chameleon. What does the chameleon do? The chameleon, what it does is that, suppose it is lying down in amidst grass or green colored objects, so it will turn itself into green. The color will become green. If it is among red objects, then it will change its color into red. So this is called a camouflage. It is being deceptive. Okay, so the synonym of deceptive is misleading. तुमको लगेगा कि ये लीफ है, लेकिन एक्चुअली लीफ नहीं है, तो ये तुमको मिसलीड कर रहा है, राइट? इट इज मिसलीडिंग यू, राइट? ओके, इनॉर्मस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनॉर्मस? इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग. इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग एंड ह्यूज. ओके, इनॉर्मस मीन्स बिग, ह्यूज, इमेंस. Okay, the next is what is an antonym? Let us see some of the antonyms. Okay, antonyms, as you know, they are opposite words. Number one is admire. अब किसी को admire करते हो, इसका opposite क्या होगा? Detest. Detest means to hate. Okay, when you are hating something, it is called you are detesting. Bravery. Bravery का opposite क्या है? Cowardice. मतलब बुज़दिली. ठीक है, इसको cowardice कहते हैं. Crooked, when something is very crooked, इसका opposite क्या होगा? Straight. In the same way, a person also can be crooked and a person also can be straight. Okay, has got nothing to do with the physicality of the thing. Number 4 is dainty. Dainty means, the meaning of dainty is very classy, very sophisticated. ओके, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी क्लासी. इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा क्लमजी. कोई अगर बहुत क्लासी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लमजी. व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू अ सर्टेन थिंग, इट डजंट लुक गुड व्हाइल यू आर डूइंग दैट थिंग.
मतलब कोई होते हैं ना जो काम करते वक्त 1000 चीज़ गिराएंगे, इधर से बेड से निकलते वक्त कुछ और चीज़ गिरा देंगे, खाना परोसते वक्त खाने का थाली गिरा देंगे, एक्सेट्रा. तो दे आर कॉल्ड क्लमजी पीपल. ओके. नेक्स्ट इज इकोनोमाइज. इकोनोमाइज का एंटोनिम है टू वेस्ट. इकोनोमाइज मीन्स आई एम इकोनोमाइजिंग द हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर. आई एम इकोनोमाइजिंग द हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मेरा जो हाउस होल्ड का जो खर्चा है उसको मैं कम कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? उसको कम कर रहा हूँ, उसको इकोनॉमी में ला रहा हूँ. उसका ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट. उसका ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट. सो आई एम वेस्टिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बिकॉज आई एम स्पेंडिंग इन मेनी थिंग्स विच आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. आई होप दीज आर क्लियर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. So these are some other words which can be used as antonyms and synonyms. Let us see some of the synonyms. Danger का synonym क्या है? Hazard. Empty, vacant. अगर कोई जगह empty है, suppose your seat is empty, you can also say my seat is vacant. Empty, vacant. Okay, I hope you are understanding. तो यहीं पे इसको मेमोराइज कर लो. फेथफुल, लॉयल. फेथफुल, द पर्सन इज वेरी फेथफुल टू हिज एम्प्लॉयर. द पर्सन इज वेरी फेथफुल टू हिज एम्प्लॉयर. दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी लॉयल टू हिज एम्प्लॉयर. मतलब विल नॉट डू एनीथिंग विच विल हार्म और विच विल गो अगेंस्ट द विशेज ऑफ द एम्प्लॉयर. राइट? दीज आर सम synonyms. Okay. In the same way, beautiful का synonyms क्या है? Attractive, pretty, lovely, fair, objective, impartial, unbiased. Suppose exams के बारे में हम लोग बोलते हैं ना, these exams that were conducted were not fair. तो हम लोग जो not fair बोलते हैं या the exams conducted were very fair. When we say fair, we can also use the exams that were conducted were impartial. Because partiality means giving preferences to certain people or certain things and being less preferential about certain other things. So when I say impartial, that means you are not preferring one thing over the other. ना तुमको इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है ना तुमको इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है. तो मतलब कि तुम क्या हो रही हो? तुम फेयर हो रही हो. ओके. जस्ट अ मिनट, समबडी इज ट्राइंग टू कम इनसाइड. Please, guys, please mute yourself. Wait, I'll mute. Okay. Now let us go to some antonyms. In the similar way, antonyms also can be used in a similar way. Arrogant. Arrogant का antonym क्या होगा? Humble. Somebody is very humble. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एरोगेंट. ओके. वेरी प्राउड एंड एरोगेंट. कॉशियस, केयरलेस. सब पर्सन इज वेरी कॉशियस. कॉशियस का क्या मतलब है? कॉशियस का मतलब ही इज वेरी वेरी केयरफुल. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? केयरलेस. इसका ऑपोजिट क्या होगा? केयरलेस होगा. ओके. क्रूकेड, स्ट्रेट. आई हैव डन दिस. क्रेजी, सेन. What is the meaning of crazy? Crazy means a person who is out of his mind. A person who is out of his mind, he does not know what he is doing. If that kind of person is crazy. So what is the opposite of crazy? Sane. And what is the synonym of crazy? What is the synonym of crazy?
द सिनोनिम ऑफ क्रेजी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इंसेन. इंसेन. ओके, सेन, इंसेन. इंसेन मीन्स क्रेजी, सेन मीन्स ओके. Now let us go to some question answers that we can solve. Okay, fill in the blanks by selecting the correct synonym for the word given in the bracket. He would not listen to anyone who tried to dash him to stay home. तो यहाँ में ब्रैकेट में क्या दिया है, अर्ज दिया है. तो अर्ज का सिनोनिम हमें निकालना है. अर्ज का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, he would not listen to anyone who tried to urge him to stay home. यहाँ बोला है to urge him to, जो urge करता है, urge का सिनोनिम पूछा है, तो इसमें क्या होगा, persuade होगा. So when I am persuading someone, I am in fact urging him to do a certain kind of thing. Okay. Question number 12. Next question. Fill in the blanks by the correct synonym. He learned to dash hunger and cold. ब्रैकेट में दिया है suffer, तो he learned to suffer hunger and cold. अब suffer का सिनोनिम पूछा है. एक है reject, yield, surrender, endure. कौन सा होगा? The correct answer will be endure. So he learned to endure hunger and cold. Okay. This is also synonym. They are forcing us to dash them. They are forcing us to, ब्रैकेट में दिया abolish. They are forcing us to abolish them. खत्म कर दें, जड़ से उखाड़ फेंकना. ओके. Uprooting something is called abolishing. Exterminating something is abolishing. Terminating something is abolishing. तो abolish का सिनोनिम पूछा है, तो इसमें क्या होगा, नंबर 1 रेटिफाई नहीं होगा. Exterminate, yes, it will be exterminate. Build, not build. Bear, not bear. The correct answer will be exterminate. So abolish का सिनोनिम क्या है, exterminate, मतलब खत्म कर देना, कुछ चीज को खत्म कर देना को क्या बोलते हैं हम लोग, exterminate बोलते हैं. ठीक है. Fill in the blanks by selecting the correct synonym of the word given in the bracket. Attempts have been made to dash these two Galilean sites but without success. इसमें क्या दिया, merge. ओके, merge दिया. merge का सिनोनिम हमें निकालना है. मर्ज मतलब दोनों चीज को कंबाइन कर देना और एक चीज बना देने को क्या बोलता है, मर्ज बोलता है. ओके. तो इसमें नंबर 1 डिसजॉइन, नो. डिवाइड, नो. यूनिफाई, यस. सो सपोज दिस इज अ कंट्री, देयर आर मेनी स्टेट्स. ओके. सो व्हेन आई मर्ज द स्टेट्स आई एक्चुअली यूनिफाई द कंट्री. ओके. व्हेन आई मर्ज द स्टेट्स आई एम यूनिफाइंग द कंट्री इनटू वन कंट्री. आई होप इट्स क्लियर. Okay, then another synonym, attempts have been made. Okay, this one I have repeated it. This one we have done. Okay. Next one is he is very dash about his father's wealth. He is very, ब्रैकेट में दिया है boastful. क्या दिया है, boastful. Somebody is boasting का क्या मतलब है? If somebody is boasting का क्या मतलब है? Somebody is becoming very proud. इसका मतलब somebody is very proud. तो ये boastful जो है, proud जो है, इसका सिनोनिम पूछा. नंबर 1 modest. modest नहीं होगा. modest क्या होगा, modest तो एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. humble भी ऑपोजिट हो जाएगा. pompous, P-O-M-P-O-U-S, yes, the correct answer will be pompous. तो proud and pompous are synonyms. Clear? Now we'll do some antonyms. Okay. Number 1 is origin. Origin का क्या मतलब है? Origin का मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह से जो प्रोड्यूस होता है उसको origin कहते हैं. Suppose tea is being produced in Assam. Tea is produced in Assam. तो मतलब क्या है? The origin of tea is क्या? Assam. The origin of this tea, जो भी तुम पी रहे हो या जो भी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट द ओरिजिन ऑफ दैट टी इज वेयर, असम. ओके. तो अभी ओरिजिन का एंटोनिम पूछा है. ऑइंटमेंट नहीं होगा, डिटर्जेंट नहीं होगा, रेमनेंट नहीं होगा, कंफर्ट
कौन सा होगा? द आंसर विल बी रेमनेंट. ओके, द आंसर विल बी remnant. The number 2, select the opposite meaning antonym. Okay, apathetic. Apathy. This apathetic comes from the word apathy. Okay, apathy means when you don't care. When you don't care about something, you are actually apathetic to that thing. Okay, तो apathy का opposite क्या होगा? Agitated, no. Happy, no. Concerned, yes. Don't care का opposite क्या होगा? Concerned. I am very concerned about you. इसका opposite क्या है? I don't care about you. I am apathetic about you. Select the opposite meaning or antonym of the given word below. Okay. Now the word is homogenized. The word is homogenized. Homogenize comes from homogeneous. The homogeneous से homogenize आया है. Homogeneous means certain many things which are same in nature to each other. बहुत सारा चीज जो same है towards each other, they are called homogeneous. Okay. They are same to each other. तो इसका क्या पूछा है? They have asked the antonym of homogeneous. Number 1 is set type, no. Multicolored, no. Different, yes. The correct answer will be different. तो homogeneous का opposite क्या होगा? Different. I hope I am clear and I hope you are understanding. Okay. Next is proof. P-R-O-V-E, proof. I hope you know the meaning of proof. The opposite meaning of proof, vapid, no. Assume, disincline, atone. The opposite of proof will be assume. When you have proof for something, when you have proved something, that means you have evidence. You have evidence. Evidence का मतलब क्या है? Evidence का मतलब क्या है? Proof. So suppose you are saying that the sun rises in the east. The sun rises in the east. When you are saying the sun rises in the east, that means you are having certain proof. When you are having certain proof, that's why you are saying that sun rises in the east. Okay, just a minute. So when you are saying that proved, that means you are saying the sun rises in the east. That means you have a proof why the sun rises in the east. When you don't have any proof, that you are assuming. तब तुम क्या करो? I assumed that the sun rose in the east. When you don't have any proof, then what you are doing is you are assuming. You are coming to a conclusion without any evidence. That is the meaning of क्या? That is the meaning of assumption. Without any evidence जब conclusion पे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? Assumption. Okay. I hope this is clear. यहाँ में पूछा है opposite antonyms पूछा है. Accolade. What is the meaning of accolade? Balcony. Accolade का मतलब when you are giving some compliments. Okay. Or awards. और certain laurels. Suppose हम लोग का पद्म भूषण दिया जाता है to certain celebrities, to certain people who have achieved a high degree of proficiency in science or arts or culture, etc. तो उन लोगों को हम लोग पद्म भूषण देते हैं. तो this is an accolade. इसको क्या कहते हैं? इसे हम accolade कहते हैं. दिस एक्कोलेट का ऑपोजिट फॉर्म क्या होगा? बैल्कनी, नो. आउटर गारमेंट, नो. ड्रिंक, नो. क्रिटिसिज्म, यस. हम लोग एक्कोलेट मतलब वी आर एक्सेप्टिंग दैट दैट पर्सन इज अ ग्रेट पर्सन. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन. तो उसका क्रिटिसिज्म करने से उसका ऑपोजिट हो जाएगा. तो एक्कोलेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म.
Next is instantly. Okay, instantly, I hope you know, it's very easy. मतलब right at that moment. Instantly means right at the present moment. Right at the present moment. Instantly means repeatedly, no. Lately, no. Gradually, yes. The answer will be gradually means slowly. Gradually means slowly. Okay. So when you are saying gradually, you are doing the things slowly. Okay. When you are saying instantly, you are doing the things immediately. Let us come to the next word. This word is called frail. Okay, the word is frail. Frail मतलब very weak. Frail means weak or old. And मतलब जो ओल्ड हो जाता है और वीक हो जाता है उसको फ्रेल कहते हैं हम लोग. ठीक है, उसको ऑपोजिट पूछ रहे हैं. तो वरीड नहीं, स्ट्रांग. यस, स्ट्रांग विल बी द करेक्ट एंटोनिम फॉर फ्रेल. तो फ्रेल का ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रांग. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूड. जैसे हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मीन्स अनरिफाइंड. अनरिफाइंड. ओके, अनरिफाइंड का क्या मतलब है? सपोज हम लोग ऑयल वेल है. ऑयल वेल क्या है? मिट्टी की जमीन के अंदर में हम लोग खुदाई करके ऑयल निकलते हैं. तो जो ऑयल निकलता है, ओरिजिनली जो ऑयल निकलता है, दैट इज नोन एज क्रूड ऑयल. बिकॉज उसमें रिफाइन, उसको रिफाइन नहीं किया है, उसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज है. तो जब व्हेन वी रिफाइन द थिंग, दैट बिकम्स रिफाइंड ऑयल और पेट्रोलियम. रिफाइंड ऑयल और पेट्रोलियम. ओके, रिफाइंड ऑयल और पेट्रोलियम. तो क्रूड, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्रूड. तो क्रूड का एंटोनिम पूछा है. क्लासिकल, नो. ग्रेसफुल, नो. Natural, no. Polished, no. The answer will be graceful. Sorry, the answer will be graceful. You have to see the meaning in perspective of what they have asked. Okay, तो यहाँ पे crude बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन इसमें कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा? ग्रेसफुल भी हो सकता है, एक्चुअली पॉलिश्ड भी हो सकता है. इसमें आई थिंक द मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी पॉलिश्ड. The more appropriate answer will be polished. Okay. So these are some of the questions that we have done here, and I hope you have learned something today, and you have understood what kinds of questions are being asked from these two topics, which comprise around 22%, which is not less. Okay. So it comprises 22% of your paper. So UDC, LDC, MTS, etc. ये सब चीज में तुम्हारा 22% के लिए प्रिपरेशन is a big part of your preparation. Okay, so I suggest that you consult some good books on English. What you can do is you can always buy a very good book called Word Power Made Easy. Word Power. Many people might have this book already. The name is Word Power Made Easy. Okay. The name of the author is Mr. Norman Lewis. So you can buy this book. If you don't get it in Tawang, you can always order it online. This is not a very costly book, but this is a book that will help you in all sorts of exams. Okay. So this Word Power Made Easy, kindly buy this book, and in next English class we will do, every English class we will take around 2 to 3 topics we will take. So minimum we will take 2 topics, maximum we will take 3 topics. क्योंकि time is very short for English classes, so we will go as per this order. So 2 topic लेके हम लोग ऐसे खत्म करेंगे, and your job is to go home, get this book or get any other book online. में there are many materials. Go home and practice English, because practice is only going to make you perfect in English. Okay. So I hope you have learned something from this class today, and it's already time. So
we have to end the class today. Tomorrow Juganta sir's class is there, so best of luck for that. Bye guys, happy studying.